Wastewater is any water that has been adversely affected in quality by anthropogenic influence. Wastewater can originate from a combination of domestic, industrial, commercial, or agricultural activities, surface runoff or stormwater, and from sewer inflow or infiltration. Clean and plentiful water provides the foundation for prosperous communities. We rely on clean water to survive, yet right now we are heading towards a water crisis. Changing climate patterns are threatening lakes and rivers, and key sources that we tap for drinking water are being overdrawn or tainted with pollution. Dirty water is the world's biggest health risk and continues to threaten both quality of life and public health around the globe. When water from rains run off roofs and roads into our rivers, it picks up toxic chemicals, dirt, trash, and disease-carrying organisms along the way. Many of our water resources also lack basic protections, making them vulnerable to pollution from factory farms, industrial plants, and domestic activities like washing clothes, utensils, and vehicles. This can lead to drinking water contamination and habitat degradation. The wastewater hazard in Azara area of Guwahati is a serious concern, and this documentary will give you first-hand information about the crisis. आपका शॉप है इधर, तो आपका शॉप का सामने तो अभी ऐसा बोला कचरा वाटर भी है, वो प्रॉब्लम तो है, तो क्या कैसा वो वाटर इधर इसका प्रॉब्लम आप सॉल्व करने से पहले आपको पूरा नाला क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी इधर में ब्लॉक है, हाँ, जैसे वहाँ में ब्लॉक किया हुआ है, आगे में ब्लॉक किया हुआ है। अगर सब आदमी ब्लॉक करेगा तो प्रॉब्लम होगा ही सबको। नाला साफ नहीं करेगा तो आपको मच्छर काटेगा तो मलेरिया होगा, कितना गंदगी बदबू फैलता है, आदमी का कितना बीमार होता है, ये सब कोई देखता ही नहीं है। ओ ये नाला गवर्नमेंट का नाला है? जी, नाला गवर्नमेंट का नाला है, गवर्नमेंट का नाला है, इसलिए डॉनबॉक्स भी कुछ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का है। इसलिए तो हाँ, जो गवर्नमेंट करेगा, लेकिन वो तो गवर्नमेंट भी नहीं करता है, डॉनबॉक्स भी नहीं करता है, तो बीच में हम लोग मर रहा है यहाँ में, क्योंकि यहाँ में इसको तो आपको पहले तो आपको गांव पंचायत जो ऑफिस है ब्लॉक, वहाँ से जाएगा ब्लॉक ऑफिस में, और ब्लॉक ऑफिस से आपको बातचीत करके उसका बाद में जाना पड़ेगा बीडीओ का पास, उसका बाद है मतलब इसका काम सॉल्व होगा, नहीं तो ऐसे तो सॉल्व नहीं है। ये आदमी लोग जगह क्लियर नहीं करते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए जल्दी जितना जल्दी हो सके इसको आप लोग क्लियर कीजिए। तो आप इधर का कम्युनिटी चर्चा किया क्या इसके लिए तो चर्चा ऐसे बहुत किया था, लेकिन आज तक कुछ भी हुआ नहीं। इसको फोटो भी खिंचवा के आपको ब्लॉक ऑफिस में दिया हुआ है, इसका रोड का नाला का एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। हम लोग का तो प्रॉब्लम होता है, ये जान क्लियर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये बंद रहने से डॉनबॉक्स का जो बाथरूम का, पेशाब का, लेट्रिन का जो वाटर निकलता है सब इधर में जमा हो जाता है, मच्छर भी पैदा होता है, और आदमी लोग इसका सेन लेकर हार्ट का बीमार हो जाता है। होने से ये सब हो जाता है, ये दुर्गंध भी नहीं होता। आप लोग उधर ऑफिस में गए क्या? वो ऑफिसर के पास में गया था। क्या बोला वो क्लियर कर देगा, हम ऑफिशियली से कर देगा क्लियर, ऐसे बोला ऑफिसर। ऐसा बोला वो क्लियर तो 2 साल हो गया इसका लिए अभी ना, वो क्लियर करने का पहले अभी कुछ करना तो अभी अच्छा है। अभी तो कुछ ऐसे मतलब जैसे आप लोग करता है क्या? कभी पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ऐसे डेटॉल, फेनल, ये सब हम तो यूज़ करता है, क्योंकि अपना अपना जगह में अपना यूज़ करेगा, दूसरा जगह में तो नहीं करेगा। ऐसा जैसे हमारा जगह है हम करता है, जैसे अभी उसका जगह है वहाँ में गंदगी करता है, वो तो साफ नहीं करता है। अभी वो दुकान का सामने में देखिए गंदगी है, दुकान का सामने में देखिए गंदगी, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। अभी मालूम हो गया साथ में, लेकिन इसको जल्दी मतलब क्लियर करना है, क्योंकि पहले जो आदमी मतलब ब्लॉक करके रखा है पहले इसको निकालना है, और ये तो हम और आप जाके तो नहीं होगा, इसलिए इसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, और वीडियो से ब्लॉक ऑफिस से आदमी लोग आएगा, आके वो लोग क्लियर करेगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा खराबी है।
কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ কোনে সমস্যাটো সমাধান কৰি নিদিয়ে কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ মানে নিজে নিজে আৰু পস্তাই আছোঁ উপায় নাই সৰু ডাঙৰ মানুহ হ'লেতো আমি নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁ সৰু সুৰা মানুহ কি কৰিম আৰু উপায় নাই So, Dr. Peter Paul, being the administrator of this Don Bosco University, I just would like to ask you a question regarding the wastewater hazard which we have in Azara, the water which is getting collected in the just outside our campus here. And how does it happen and what is the history behind how this whole thing of water getting collected started? You see, one thing, the canal, when you first started here, we were hoping that this canal will be the water carrier for the waste. And actually it is built by the irrigation ministry of Assam, so that the water that is gathered around here can be carried to the river from Butra or to the lake here and from there. But then in the past there have been grants given for this purpose to make a canal. But what we understood from different reports that these grants have been taken and eaten off and no construction is done. But primarily the canal was built, cut, but nothing beyond that. So when he came here, we realized that most of the landlords, they're just filling in front of their house the canals to enter to their compound. And very, very few have got culvert, human pipes under their bridges. And so if we go around, this canal goes right round, turns left down, it goes down to the lake side. But nowhere the water flows through. And so what happens now is that each one of us, including ourselves and our neighbors, they let out the water in front of their houses because there's no way of letting it behind. Behind is opposite. It goes on every dry season, so there's no stagnant water continuously. But rainy season, when it comes to monsoon season, it's just filling up, to the point that almost overflows the road. In the past, we had requested the village people to cooperate with us to build it, but they are not ready because each one is looking after their own area. In fact, I myself had applied or rather written a letter for them in the name of the community here to the agricultural commissioner, but no answer has come and never informed me what they have got because it was not signed by us, it was signed by them and the foundation was done by me for them. So till now, what happens now, like our hostel water wastage, there's no way we can flow it out except flow into the canal. And as I said, because of the soil, it sinks. So there's no real problem in that. Of course, if it's not properly done, in the long term, it can be a hazard to health. We tried once even to improve this one by trying to dig into our compound and make a thing, but then the water level is very high here. So how much water can you put? The moment you put into the tank, the water overflows. The whole thing will fall back to the lower level. So the lowest level is the canal. So eventually it flows back to the canal. So that is our problem. So, by the way, do we have some kind of a treatment, at least from the water which is coming from our compound? Do we have some kind of chemical or something that can treat the water so that these mosquitoes breeding and things can be also? Every month or every fortnight, our boys from the hostel side, our security boys and helpers there, they do clean the canals and they put this, what they call it, that phenol and powder, so that whatever comes out, there should not be smell, there should not be any stagnant thing, and so that it's clean. What comes out should be proper and doesn't cause any harm to the people around. They will smell. So that means our university is actually taking care of some kind of treatment is there. Some kind of water treatment is done just to prevent the health hazards of the area. So, thank you, Dr. Peter Paul.